Okay, so in the last session we were looking into tmap, right? So we got stuck in one of the points there. We will continue. Okay, so let me create the groups once again. So we were looking into tmap understanding, right? So we have input. So we are reading couple of records from this input component. Like we have select star from emp query. इस टेबल से हम लोग कुछ डेटा रीड कर रहे हैं. दैट आई वांटेड टू गेट इट इनटू tmap टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ tmap. ओके, db इनपुट से tmap को हमने कनेक्ट कर लिया. वंस वी कनेक्ट दिस वी कैन गेट वन इनपुट group here, right? One input group we got it here. Okay, so we can read this data from incoming group and we can write it into the output groups. We can have one or multiple input groups in tmap, as well as we can have one or multiple output groups in tmap. In the left hand side section we have the uppermost corner we have input group columns. In the below downside left hand side corner we have schema editor. whatever columns यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रो 1 के जो एक इनपुट ग्रुप से आ रहे हैं, दोज वी कैन एडिट इट हियर इन द स्कीमा एडिटर. ओके, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स का डेटा टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं. हियर वी कैन राइट आर एक्सप्रेशन बट नीड नॉट टू गो देयर एज ऑफ नाउ. ओके, हियर वी कैन राइट the we can make any changes into the column names, data types, or etc. Okay, same is applicable for right hand side, the roundmost corner. the output group जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको हम एडिट कर सकते हैं, कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं या फिर यूज़र डिफाइंड कोई भी कॉलम्स हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं, राइट? In the center we have variable section. These are temporary variables we can create for perform any logical operation or any variable we require in middle of for any calculation, like any default value we wanted to put it somewhere into a variable. जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना है, जो भी लॉजिक हम वेरिएबल हम जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज वेरिएबल्स इज टॉप टू बॉटम. ऊपर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एंड वन बाय वन सारे वेरिएबल्स एग्जीक्यूट होंगे. एग्जीक्यूट इट मीन्स व्हाट, जो भी वैल्यू का एलोकेशन है दैट विल बी गेटिंग हैपेंड. विल सी इन वन ऑफ द एग्जाम्पल वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एज ऑफ नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट द आउटपुट ग्रुप. ठीक है, आउटपुट ग्रुप मतलब क्या है? You are reading the data from one input source. We can create multiple output sources here, output groups here. ठीक है, create output group. ठीक है, output group 1. ठीक है, output group 1. Let me create it. ठीक है, once I create the output group I can drag वन बाय वन ऑल द कॉलम्स, एल्स सेलेक्ट सारे ही कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं. क्लिक ऑन फर्स्ट कॉलम, प्रेस शिफ्ट बटन एंड क्लिक ऑन द लास्ट कॉलम, so you will get selected all the columns. I am dragging all the columns into right hand side, it means into the output group here. Okay, once you drag them into output group you can click on apply, or else you can make any changes into your column data type or names or anything else. Click on OK, apply and OK. Let me have t log row to display the content which is coming from tmap. As of now we don't have any particular logic created inside tmap. Right click into the tmap, output group 1 हमने जो बनाया था उसको हमने select कर लिया and connect into the t log row. Sync columns, go to run tab, clear and run. We will be getting all the records as we are not filtering any records here. See, we got all the records in the output section through tlog row 1. इतने सारे records आ रहे हैं. ठीक है, tmap में चलते हैं. I wanted to show you couple of
options, catch output reject, catch lookup inner join reject, and schema type built-in or repository. This is not required as of now. Okay, you can create any output. Additional column, that user defined column also you can create. Let me show you one additional column here. Let's say I want src. I am giving the column name as src. ठीक है, I want the default value for it. Okay, or column name I want is updated by ठीक है, यहाँ पे मैं उसको वैल्यू पास करूँगा अप्लाई. I wanted to pass the value, the hard coded value. Okay, click on apply, click on OK. This is asking me to propagate the changes. मतलब जो भी स्कीमा हमने अभी एडिशनल और एक कॉलम आ गया राइट आउटपुट ग्रुप में, दैट नीड्स टू बी पॉपुलेटेड इनटू tlog row2. मतलब वो चेंजेस यहाँ पे भी अप्लाई होने चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग दी propagate the changes. Click on run button. So let's check the output. We got one more additional column, that is updated by, जो हमने tmap में generate किया था. So in this way you can create your user defined columns here into tmap. Okay, tmap is the biggest component of Talend. You can do many things with tmap. Okay, so let's check with this catch output reject. If I make it as true, within this group what will happen, if you have any other particular group, उस ग्रुप से अगर कोई रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स है, मतलब जो भी फिल्टर हो रहे हैं रिकॉर्ड इस ग्रुप में, यहाँ से आ रहे हैं 100 रिकॉर्ड्स एंड कुछ रिकॉर्ड्स फिल्टर हो रहे हैं, दोज वी कैन गेट इट. ओके, हाउ, नॉट इन दी सेम ग्रुप ओनली. ओके, ठीक है, यहाँ यहीं पे हम लोगों को वो नहीं मिलेगा. तो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट वन मोर ग्रुप हियर. ठीक है, उसको मैं आउटपुट रिजेक्ट नाम देता हूँ. ठीक है, आउटपुट रिजेक्ट, क्लिक ऑन ओके. सो आई हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप नाउ. ठीक है, सो हियर आई वांटेड टू चूज दी सेटिंग्स. यहाँ पे मैं उसको ट्रू करूँगा. व्हाट रिकॉर्ड्स आई वांट हियर, आउटपुट ग्रुप कैच आउटपुट रिजेक्ट. ठीक है, catch output reject. I want all the columns from the input group. I'm dragging them into the output reject. ठीक है, okay, so these many columns we have. लेकिन this group should contain only those records जो आउटपुट रिजेक्ट में जाएंगे. मतलब जो भी रिकॉर्ड्स रिजेक्ट लिस्ट में जा रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इस वाले ग्रुप में आएंगे. एज ऑफ नाउ लेट मी डिलीट दी कॉलम विच आई हैव क्रिएटेड हियर, सो विच विल नॉट बी क्रिएट एनी एडिशनल कन्फ्यूजन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्लिक ऑन ओके, अप्लाई एंड ओके. propagate the changes. Let me create one more output component, tlog row. राइट क्लिक ऑन दी tmap, आउटपुट रिजेक्ट हमने एक नया ग्रुप बनाया था. लेट मी क्लिक ऑन सिंक कॉलम्स, टेबल व्यू, एंड लेट्स गो टू द रन टैब. बिफोर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस जॉब, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोर्स, दैट इज़ 5. इस ग्रुप में सारे रिकॉर्ड्स जा रहे हैं राइट. एंड दिस सेकेंड ग्रुप आई वॉन्ट टू गेट द रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स, वॉट एवर the transformation logic or any particular logic, if it is failing to process the records from the first group or any other groups. okay, जहाँ से मेन डेटा फ्लो हो रहा है, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स लॉजिकली आर गेटिंग ड्रॉप्ड.
apply and okay. Let me clear and run. Let's check how many records we will get into tlog row 1, which is our main flow. Am I clearly audible? Yes, sir. Okay, in the first tlog row we are getting all the records, but second tlog row we are not getting any record here. Why? Because here none of the records are getting dropped, right? 5 के 5 records first flow से ही निकल जा रहे हैं, right? So for that what I'll do is I'll put some logic here. Expression filter, एक कॉलम लेता हूँ मैं, ओके, डॉट इक्वल्स, यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन पास करता हूँ, एच आर डी पी टी इज इक्वल्स टू एच आर. फ्रॉम द फर्स्ट आउटपुट ग्रुप आई वॉन्टेड टू पास ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच आर हैविंग डी पी टी कॉलम वैल्यू शुड बी एच आर. ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है मैंने, रो वन डॉट डी पी टी डॉट इक्वल्स, equals is a method, equals is a method, it is used to validate the value coming from the column dot equals hr, column dot equals hr. ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए, चेक करने के लिए जावा में मोस्टली इक्वल्स मेथड यूज़ होता है. यहाँ पे भी हमें वही यूज़ करना चाहिए. जब कहीं भी आपको टैलेंट में स्ट्रिंग चेक करना है, इक्वल्स मेथड यूज़ करना चाहिए. ठीक है, नाउ वी आर चेकिंग डी पी टी कॉलम में एच आर वैल्यू आएगा, तभी इस ग्रुप में रिकॉर्ड्स जाएंगे. लेट मी अप्लाई एंड ओके. इफ any of the record having DPT value is apart from HR, then those will be getting rejected. Those should be flow from the second group, right? सेकेंड ग्रुप से वो फ्लो होना चाहिए. ठीक है, अप्लाई एंड ओके. लेट मी क्लियर एंड रन. See, in the first output group only it is flowing 2 records which are DPT HR, लेकिन सेकेंड में IT एंड फाइनेंस के रिकॉर्ड फ्लो हो रहे हैं because the second group is catching those records which are not satisfying the condition of the output group 1, right? इस ग्रुप से जो भी रिजेक्ट हो रहे हैं those are getting catched by this group, correct? Why those are getting catched? Because of catch output reject option is marked as true, right? So this is the first option in the settings, tmap settings of the output group. ठीक है, interviewer may ask you explain about tmap. These are all the small things you have to explain, so he will get impressed if you answer in very precise that tmap में इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं. So your answer should be pretty much precise for that. Okay, click on apply. अभी तो यहाँ पे जो भी records रिजेक्ट हो रहे हैं दोज आर गेटिंग कैच्ड बाय दिस आउटपुट ग्रुप. ठीक है, एंड वी कैन कैच दोज रिकॉर्ड्स एंड वी कैन स्टोर समवेयर, राइट? जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक से हमने कुछ रिकॉर्ड्स ड्रॉप कर लिए एंड विच आर नॉट सेटिस्फाइंग द बिजनेस लॉजिक, सो दोज रिकॉर्ड्स वी कैन कैच इट एंड स्टोर समवेयर इनटू द लॉग फाइल. ठीक है, and we can tell the stakeholders or user that these are the rejected records. These records doesn't meet the criteria of whatever logic you have given here or anywhere, right? So वो logic हमारा satisfy नहीं हो रहा था, so that's why these values or these records are we are catching into some log file or error records, right? So वो record हम miss नहीं करेंगे. We can show them that these are the records and we can reprocess if we get the correct values for these records, right? ऐसे हम उनको convince कर सकते हैं, right? Click on OK. So apart from this, what else we can do? As of now we are reading only one input group, right? What else we can do? यहाँ पे और एक option है catch lookup inner join reject. This we can validate if we have multiple input groups. It means हम जब भी join कर रहे हैं तब हम लोग ये validate कर सकते हैं. How? Let's get
create a new job like tmap joins. We can join the input sources. Those can be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous, heterogeneous, it means what? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं. होमोजीनियस भी कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी कर सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सोर्सेस. ठीक है. संतोष raised the hand. If you have any question, you can go ahead. Any question, Santosh? No, sir, by mistake click on this. Okay, no problem. Go ahead. So let me create a connection first, else let me get it from the previous job. Control C. So we have this connection. So let me create one T Oracle input. Okay, T Oracle input. From here I wanted to read one table. I'm clicking on use existing connection, click on component list. ठीक है, यहाँ से मैं डेटा रीड करना चाहता हूँ. What table I wanted to read? Let me go to SQL developer. I have two tables here, employee and department. Let me check the employee table first. See, we have 17 records here. Let me get this query. Let's go to T Oracle input. यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया. Guess the schema. Guess the schema to create a schema inside TDB input or T Oracle input component, because this component is based on the schema only, right? Let's change the data type. Big decimal usually won't work with Oracle. It will throw an error sometimes. So let me make it as integer. Click on OK. Okay, schema has been got created. Let's test the job with the single table only. पहले हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं whether it will work or not. Sync columns, get to run tab and run the job. See, we are not getting any single records here. Why? Because I have inserted the records here, right? But I can see the records here from the SQL developer, but I cannot see them through Talend because I didn't committed the data here. Let me commit them. Let's rerun the job and let's check whether we will get the data or not. See, I got the data now, right? So I wanted to read this data through tmap now. Okay, tmap okay, tmap में input group आ गया. Apply and OK. I didn't created any output group here because I wanted to read one more input. Okay, T Oracle input. Before adding, I should test this job as well. So for that, let me control Z and let me T Oracle input. मुझे दोनों टेबल्स के डेटा को वेरीफाई करना चाहिए whether those I can read from this job or not. That is step by step हमें जॉब के लिए जाना चाहिए, right? Let's check the data from department table as well. We are having data for department table as well. Let's check here. Guess schema. So we have couple of columns for department table as well. We have one column which is big decimal, so let me change it to integer. Okay,
save. Let me create tlog row to test the departments table. Connect it to tlog row to sync columns. Go to run tab. See whether we can able to read the data from department table and employee table or not. So both of the tables we are getting the data through two different log rows, right? So I'm removing these two after testing it. Let me add tmap component. If I connect the first input to tmap, that will be my main input to the tmap. That this is my main table of tmap. If I connect this later, log row main connecting to tmap, this will be connected as with dot line, and we call it as lookup connection, lookup table for tmap. This is main and this is lookup, and also we can call it as the main will be left table and the lookup will be your right table, right? और दोनों भी database tables हैं, oracle tables हैं. You can call it as homogeneous tables. If one of them is file, one of them is database or any different database, we can call them as heterogeneous sources. Let's go to the tmap. You can see two different input sources here, right? Row 1 and row 2. I wanted to join these two input sources. Before that, let me create the output group. Join emp dept. ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, emp एंड dept को. लेट मी क्लिक ओके. इट हैज़ क्रिएटेड द आउटपुट ग्रुप हियर. ठीक है. सो जैसे हम लोग SQL क्वेरी लिखते वक्त कॉलम लेते हैं लेफ़्ट टेबल के, राइट टेबल के, राइट, वैसे ही यहाँ पे भी हमें कॉलम्स ट्रैक करने हैं लेफ़्ट एंड राइट के. बट बिफोर गोइंग टू दैट, let's perform the joins. You have to click on this settings button to create the join between these two sources. Okay, once I enable this setting in row 2, you can see these are the settings, right? And these are the columns from the lookup table. It means department table. These are the columns from employee table, nothing but your left table. To join these two sources, we need at least one common column, right? While creating the table, I have created a common column called dept. एम्प्लॉय टेबल में भी आप देख सकते हो हमने कुछ DEPTs मेंटेन करके रखे हैं, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम we are joining these two sources. So how we can join them? I need to drag that column and place in front of the column which I wanted to join against, right? यहाँ से कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर हो गया, राइट? इफ़ आई हैव वन मोर कॉलम विच नीड्स टू बी देयर इन अ जॉइन मैकेनिज्म ऑफ दीज टू सोर्सेज, आई हैव टू ड्रैग दैट कॉलम एज वेल. अगर दो कॉलम इन्वॉल्व है जॉइनिंग में, तो दो कॉलम भी आप लोग ड्रैग कर सकते हो. जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम है उसके सामने ले जाकर रख सकते हो. डिपार्टमेंट कॉलम के सामने मैंने DPT कॉलम रख दिया है. दिस इज़ माई कॉमन कॉलम ऑन विच आई एम गोइंग टू जॉइन दीज टू सोर्सेज, राइट? This is expression dot key. This is the key of between these two sources where I am joining these two sources, right? So I can drag columns from left and right table, both of the tables. I want all the columns from left table first and right table as well. ये column मेरा left table से आ रहा है, तो I am not taking that column. Okay, let me bring all the columns from the second source. Okay, so all the columns from left and right, left table and right table are there into my output group. So what kind of join we are making here? What kind of join is going to be happened here? कौन सा join यहाँ पर हो रहा है? So देखते हैं. So what are the settings here? Property and value. One is lookup model, second one is match model, join model, store temp data. As of now, don't think about store temp data, just look into these first properties which are having different values here. Lookup model is load once
reload at each row cache. यहाँ आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ज्वाइन कैसे होता है, ठीक है, दो सोर्सेज का ज्वाइन कैसे होता है. मैच मॉडल, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू. ओके, so match model is unique match. By default, when you perform a join in team app, you can see by default you will get unique match. Interviewer may ask you, because उनको चेक करना होता है कि आप रेगुलरली टैलेंट पे काम करते हो कि नहीं. तो हाउ यू कैन क्रॉस चेक दैट. डिफ़ॉल्ट मैच मॉडल क्या रहता है टीम ऐप में. so you have to tell them that unique match. Okay, here multiple match models we have. One is all rows, unique match, first match, and all matches. Okay, unique match, how it performs or how it get the match values we will see. ठीक है, let me put it as unique match as of now. join model, अब यहाँ पे मैच मॉडल हो गया, कौन सा रिकॉर्ड किसको मैच होगा, या फिर मल्टीपल मैचेस है तब ये काम में आएगा मैच मॉडल. ज्वाइन मॉडल आपका एक्चुअल में किस टाइप का ज्वाइन है दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. आपका ज्वाइन टाइप कौन सा है, वेदर इट इज़ लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, वट एवर, इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ज्वाइन मॉडल. देखते हैं इसमें कितने ऑप्शंस हैं. by default left outer is nothing but left join and inner join. There are only two types of join team app can perform. Interviewer may confuse you, team app में कितने टाइप के हम join हम perform कर सकते हैं. There are only two types of join which team app can perform, that is inner join and left outer join. यहाँ पे फुल आउटर जॉइन या फिर राइट आउटर जॉइन, इट नेवर गिव्स यू दैट ऑप्शन. ओके, सो इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन. लेट मी पुट इट एज लेफ्ट आउटर जॉइन एज इट इज डिफॉल्ट. क्लिक ऑन ओके. सारे डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं अपने, ठीक है. क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके. Let me take the T-log row, right click, table view, sync columns, check the columns from T-log row. सारे columns आ गए हैं, right? Click on OK. Let me go to run tab, clear and run. Let's check what output we will get. See, we are having all the records from left table, right? यहाँ तक DPT name, right? DPT सारे records हमारे left table से आ रहे हैं, and matching records from right table, right? There are few records which doesn't have match into the right table. मतलब department table में मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए मैचिंग वैल्यूज़ नहीं है. सो दैट्स वाई द रिलेटेड वैल्यूज़ आर नल कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, राइट. सो दिस इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट ज्वाइन. व्हाट इफ वी विल पुट इट एज इनर ज्वाइन, what if we will put it as inner join instead of left outer join. Tmap performs only inner join and left outer join. I have kept inner join now to test the job. Okay, देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स मिलते हैं अभी. So we got all the records which are only matching. नल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट. लेफ़्ट टेबल से भी नल नहीं आ रहा है, राइट टेबल से भी नहीं आ नल नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग ओनली इनर जॉइन रिकॉर्ड्स. मतलब मैच है तभी रिकॉर्ड्स आएंगे, लेफ्ट से भी और राइट से भी. अगर मैच नहीं है तो नहीं आएगा. दैट्स द इनर जॉइन वी आर परफॉर्मिंग, एंड टीम ऐप परफॉर्म्स ओनली इनर जॉइन एंड राइट जॉइन. ओके, सो व्हाट आर दोज रिकॉर्ड्स विच आर नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन. मतलब इनर जॉइन हो रहा है लेकिन जो रिकॉर्ड्स हमारे रिजेक्ट हो रहे
वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। लेट मी क्रिएट inner join reject, click on OK, drag all the columns from left table, drag all the columns from right table as well, ठीक है। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, कैच लुकअप इनर जॉइन रिकॉर्ड, लेट्स टेस्ट दिस, आई विल मेक इट एज ट्रू, click on apply and OK. Let me put the tlog row, right click on tmap row, inner join reject, table view sync columns, let's go to run tab, clear and run. Fifteen records we are getting from the actual join. 2 records ऐसे हैं जो inner join से reject हो रहे हैं, right, जो inner join से reject हो रहे हैं, we will be getting only those records which are inner join से reject हो रहे हैं। लेकिन और भी कुछ records हैं जो राइट टेबल में अवेलेबल हैं लेकिन उनके लिए मैच नहीं मिल रहा है लेफ़्ट टेबल में, दोज रिकॉर्ड्स tmap won't consider to bring it into the output, okay। 15 records which are having match, right, लेफ्ट एंड राइट टेबल में उनका मैच है। 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो लेफ़्ट टेबल से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइट टेबल में उनका मैच नहीं है। ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो राइट टेबल में हैं लेकिन लेफ़्ट टेबल में उनके लिए मैच नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड tmap नहीं लेकर आएगा इनर जॉइन रिजेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द इनर जॉइन रिजेक्ट आउटपुट। व्हाट इफ आई विल मेक इट एज लेफ्ट जॉइन, what if I'll make it as left join, will I get any output reject of it? Let's check. I am performing which join? Left outer join, right, and I am expecting I should get the records for inner join reject. Inner join reject का फंडा क्या है, जो भी records लेफ़्ट टेबल से आ रहे हैं एंड वो रिजेक्ट हो रहे हैं ज्वाइन मैकेनिज़्म में, वही सारे रिकॉर्ड्स इनर ज्वाइन रिजेक्ट में एज ए रिजेक्टेड रिकॉर्ड आएंगे। लेकिन जब आप लेफ़्ट ज्वाइन परफॉर्म करोगे सारे रिकॉर्ड्स तो आपके यहाँ पे आ ही जाएंगे, राइट, एक भी रिकॉर्ड रिजेक्ट लिस्ट में नहीं जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, hence you won't get any record when you are performing left outer join and expecting to get the inner join reject result, okay, in that case you won't get any record there. Clear everyone? Any question? Yes, sir. Okay, so this is what inner join reject. Two types of joins tmap can perform, one is left join, left outer join, and another one is inner join, okay. This is about the join model, this is about the join model, okay. And tmap can join homogeneous and heterogeneous sources, same sources या फिर different sources as well. At least you should have one common column between two sources to join those columns, ठीक है। And you can have multiple output groups in the tmap. You can create user defined columns as well. You can add the filter conditions in the output group, different output groups, you can have different filter conditions. So this is the way we can create, or we can join the two sources.
Now after this, you might have got a question that since tmap is performing only inner join and left outer join, then how we can perform the right join or full join? Okay, how we can perform the right join or full join? Interviewer may ask you this question. Mostly interviewers ask this question if they are pretty much interested on talent only, then they will ask you about this question whether you have hands on experience on talent or not. तो टैलेंट तो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो ऑप्शन फुल ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन, देन हाउ यू कैन परफॉर्म द फुल ज्वाइन और राइट ज्वाइन. So that is we are going to cover in the next session. So